So visible, NCERT? Yes, sir. Okay. So atmospheric circulation and weather systems. This is the chapter for today, 10th chapter in NCERT +1 geography. तो इसके अंदर अब बेसिकली हम पढ़ेंगे कि अलग अलग लेवल पे क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर और बाकी के फैक्टर्स का वेरिएशन आता है, उससे एसेंशियली वेदर पे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है. सो यू हैव टू सी हाउ द वेरियस फैक्टर्स दैट जनरेट अ वेदर interact with each other and create a particular type of weather at a particular place in a particular day. जैसे आज अगर आपके वहां पे ठंड है या गर्मी है या बारिश हो रही है या आंधी चल रही है, तो उसके लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So let's deal with them one by one. So do you realize that our body is subjected to a lot of air pressure? As one moves up, the air gets rarefied, it should be not verified, and one feels breathless. Rarefied मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और आपको ऐसे सांस लगेगा कि ठीक से आ नहीं रही. So as you go uphill, most of the people above 5,000 meters will start feeling this issue. Yeah. The weight of a column of air contained in a unit area from the mean sea level to the top of the atmosphere is called the atmospheric pressure. तो essentially जो पूरा का पूरा air column है sea level से लेके top of the atmosphere तक, that is about 400 kilometers, उस पूरे का weight is being put upon you. ठीक है. And that's the pressure or atmospheric pressure. Pressure के लिए simple सा method हम use करते हैं, it is equal to force by area. याद है? Pressure is equal to force by area. So force acting upon a particular area. That's how we define it. Okay. So इसीलिए प्रेशर की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इस तरह से देखते हैं, या पास्कल्स के लेवल पे देख लेते हैं. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए लेकिन हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट हैं. सो इट इज एक्सप्रेस इन द यूनिट्स ऑफ MB, that is bar, millibar, and the pascals. So the widely used unit is kilopascal, written as HPA. KPA नहीं लिखते, HPA लिखते हैं. At sea level, the average atmospheric pressure is 1013.2 millibar और 1013.2 HPA. एक ही तरह से कन्वर्टेबल यूनिट्स हैं, तो जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं. ये वाला इतना ही चीज जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे पंजाब सिविल सर्विसेज या हरियाणा, उसमें पूछ लेते हैं व्हाट इज द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल. सो इतना क्वेश्चन भी पूछा उन्होंने वेरिएबिलिटी बना बना के. ठीक है. ओके. अब ऑब्वियस है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी, प्रेशर कम होता जाएगा, एयर कॉलम अबव यू विल आल्सो डिक्रीज. सो देयरफॉर देयर इज अ वर्टिकल वेरिएशन इन प्रेशर. सी द डिक्रीज amounts to about 1 millibar for each 10 meter increase. तो हर 10 मीटर के बाद 1 मिलीबार कम हो जाएगा. तो इसकी वजह से 1 kilometer above sea level the pressure is less, 5 kilometer even less, 10 kilometers even less. It keeps on decreasing. And the temperature also keeps on falling. That's why I said कि 5 kilometer above the sea level एक तो टेम्परेचर तो फॉल हो ही रहा है, लैप्स रेट जिसको हम बोलते हैं, है ना, साथ ही साथ प्रेशर भी फॉल हो रहा है. So low temperature, low pressure survival आपका होगा. Now the vertical pressure gradient force is much larger than the horizontal pressure gradient force. Vertical मतलब जो आपके सिर के ऊपर पड़ रहा है उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल जो साइडवेज पड़ रहा है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. But it is generally balanced by a nearly equal and opposite gravitational force. तो ग्रेविटी आपको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर दिया ना, उससे बैलेंस हो जाता है. Hence, we do not experience strong upward winds. So it's not that कि आप खड़े खड़े उड़ रहे हो. So horizontal distribution of pressure. Let's see. So small difference in pressures are highly significant in terms of wind direction. ये हमने पहले भी देखा. Essentially, जब high pressure और low pressure इस तरह से कहीं एक दो regions के अंदर create होगा, then the wind can follow from high pressure to low pressure. So that kind of a wind movement will be there. ठीक है. So horizontal distribution of pressure is studied by drawing isobars. Isobars क्या होते हैं? ये जो ऊपर जैसे draw कर रखे हैं. So it is basically a line joining places having equal pressure. So they are isobar. इससे पहले आपने isotherm एक definition पढ़ी थी. That is line joining places with equal. What is equal in isotherm?
हेलो हेलो, टेम्परेचर। ऐसी एक और होता है आइसो हाइट, so that is with equal rainfall. तो ये इस तरह की आपकी बड़ी सारी टर्म्स आएंगे, ठीक है। Then in order to eliminate the effect of altitude on pressure, it is measured at any station after being reduced to sea level for the purpose of comparison. The sea level pressure distribution is shown on the weather maps. तो आमतौर पे weather maps पे कौन सा pressure distribution होता है? Sea level pressure distribution. It's not the higher altitude. तो हो सकता है कि यहाँ पे एक माउंटेन भी हो, लेकिन इसको हमेशा रिड्यूस टू सी लेवल करके फिर दिखा। लो प्रेशर सिस्टम इज enclosed by one or more isobars with lowest pressure in the center. So लो प्रेशर सिस्टम को कैसे दिखाते हैं? एक या उससे ज्यादा आइसोबार्स ऐसे ड्रॉ करेंगे और लो प्रेशर सेंटर में दिखाएंगे, फिर बढ़ता हुआ प्रेशर आउटवर्ड दिखाएंगे, 1014, 1016, 1018 like this. High pressure system is also enclosed by one or more isobars with the highest pressure in the center. तो दिखाने का तरीका इधर भी सेम ही है, ठीक है। Then world distribution of sea level pressure. तो वर्ल्ड ओवर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है देखिए। अब जहां जहां पे हमारे पास एक विंड सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तो हमें पता है इक्वेटर के ऊपर तो देयर इज अ लो प्रेशर सिस्टम, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये वाला पूरा बेल्ट के अंदर, ठीक है। बट यू हैव टू सी सीजन कौन सा चल रहा है। नाउ दिस इज जनवरी। इन जनवरी व्हाट इज हैपनिंग, द सन इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, so you have winters in the northern hemisphere. So therefore during the winters what is going to happen over the land is going to get cooler much faster. हमने पढ़ा था कल, since it is cooler therefore there will be a high pressure system, ठीक है। The atmosphere gases will start coming down. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो जितनी भी गैसेस हैं वो नीचे की तरफ आएंगे, है ना। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक गैसेस स्टार्ट राइजिंग अप, सो लो प्रेशर होता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे पास लो प्रेशर क्यों आ रहा है फिर? कल पढ़ा था, बताओ। Why do we have this low pressure system here? See, over the land it starts getting cool, but over here you got a particular stream, a warm current. याद है? Warm ocean current. हेलो हेलो, गल्फ ऑफ स्ट्रीम। हाँ, गल्फ स्ट्रीम। तो ये गल्फ स्ट्रीम ऐसे ऊपर की तरफ जो जा रहा है, इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएटेड है। दैट इज प्रोवाइडिंग द वार्मथ and that gets convected into the air, and the air mass then starts rising up and there is a low pressure here. This is the reason why this is like this. And this low pressure is so important in bringing winters in this particular area, because for polar area से जो wind है वो यहाँ पे blow करेगी and it will be bringing a lot of winter here. Okay, high pressure के time पे क्या होना, wind जो है वो blow out करता है, लो प्रेशर के टाइम पे विंड विल ब्लो इन, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द विंड्स आर ब्लोइंग आउटवर्ड, एंड मोर ओवर दिस आउटवर्ड विंड, अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास हाई प्रेशर है, जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा इधर हमारे पास लो प्रेशर सिस्टम जैसा बन जाएगा। तो ये जो इस तरह से विंड्स यहाँ पे आ रही हैं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून भी लेके आते ठंड के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Let's start studying what the NCERT has to say. The world distribution at the sea level pressure in January and July has been given in the figures. Near the equator, the sea level pressure is low and the area is known as the equatorial low. तो इक्वेटर के अंदर तो लो ही रहना है, चाहे ठंड है चाहे गर्मी है, चाहे जनवरी ले लीजिए चाहे जुलाई ले लीजिए, दोनों टाइम पे यही इशू रहेगा। Along 30 degree north and south are found high pressure areas known as the subtropical high pressure belt. तो ये भी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। Further polewards along 60 degree north and south, low pressure belts are termed as the subpolar low pressure belts. तो यहाँ पे भी continuous low pressure है। Near the poles, the pressure is high and it is called as the polar high. So these pressure belts are not permanent.
That's the main feature, because with the position of the sun, it will keep changing. Okay, so this is the situation during summers now. During summers, there is a lot of heating happening in this landmass, and Punjab plains and Tibetan plateau, this area specifically. That is why there is a low pressure. And that is why this is the southwest monsoon, which is these days coming in into this area. It will be sucked in. ठीक है, जो ITCZ भी है ना, ये यहाँ से शिफ्ट होके थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो इधर से विंड आ रही है और इधर से विंड आ रही है, एक जगह पे कन्वर्ज होती है, उसको बोलते हैं ITCZ. ठीक है, सो दिस विल आल्सो शिफ्ट नॉर्थवर्ड बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर सिस्टम. का पूरा विंड सिस्टम ही ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा. इसी वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून आता है. खैर, अभी आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो सन है दैट इज डायरेक्ट. ठीक है, सो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है. ठीक है, इधर विंटर्स हैं, तो जहां विंटर है वहां पे हाई प्रेशर सिस्टम, और जहां पे समर है उधर लो प्रेशर सिस्टम. लेट्स सी. They oscillate with apparent movement of the sun, जिसकी हमने अभी बात की. In the northern hemisphere, in winter they move southward, and in summer they move northward. So that's how the situation is going to be. The entire pressure belt system is going to shift. Okay. So let me put it more clearly for you. Have a look at this. So this is the situation of equatorial low pressure, जो हमने अभी पढ़ा. ठीक है, then there is subtropical high pressure, then there is subpolar low pressure, and then there is polar high pressure. इस तरह से low high के sequence चल रहा है एक तरह से. ठीक है, low pressure, high pressure, low pressure, high pressure. Fine. अभी ये जो सिस्टम है हमारे पास, दिस इज अ जनरल सिस्टम, ये इसी तरह से रहते हैं. ये पूरे का पूरा सिस्टम अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है. समर्स के अंदर इसकी मूवमेंट पूरे सिस्टम की अपवर्ड हो जाएंगी. द बेल्ट्स विल शिफ्ट अप टुवर्ड्स द नॉर्थ. ठीक है, विंटर्स के अंदर दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग साउथ. यही उन्होंने देखा है, पूरी की पूरी प्रेशर बेल्ट्स की मूवमेंट होगी अपवर्ड या डाउनवर्ड. ओके, देन forces affecting the velocity and the direction of the wind. So you already know that the air is set in motion due to differences in the atmospheric pressure, and the air in motion is called as wind. So the wind blows from high pressure to low pressure. The wind at the surface experiences friction. कभी भी किसी surface से निकलेगा तो friction तो हो गई. In addition, the rotation of the earth also affects the wind movement. हमने पढ़ा था Coriolis effect. So the force exerted by the rotation of the earth is known as Coriolis force. Thus, horizontal winds near the earth's surface responds to the combined effect of three forces. One is the pressure gradient, so high pressure to low pressure. Second is the frictional force, and third is the Coriolis force. तो तीन तरह की forces हैं surface के पास से चलने वाली wind के ऊपर act करेंगे. In addition, the gravitational force acts downward. तो वो एक additional force आप मान के चल सकते हैं, fourth force. So pressure gradient force. So higher the difference in pressure, more will be the velocity. Obviously. आया ना? So the rate of change of pressure with respect to distance is called the pressure gradient. तो एक जगह और दूसरी जगह के बीच में with distance कितना pressure में change आ रहा है, उसको बोलते हैं pressure gradient. अभी जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा wind speed से चलेगी. Frictional force. So this also affects the speed of the wind. So it is greatest at the surface, and its influence generally extends upon the elevation of 1 to 3 kilometer. 3 किलोमीटर तक फ्रिक्शन का फर्क पड़ता है, उसके आगे नहीं पड़ता. ओवर द सी सरफेस द फ्रिक्शन इज मिनिमल. लैंड के ऊपर माउंटेन एरिया के अंदर फ्रिक्शन का मेजर असर पड़ता है. देन कोरियोलिस फोर्स, एक यहाँ पे ना फ्रिक्शनल फोर्स के साथ रिलेटेड चीज है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड. आजकल ऐसा कुछ ना कुछ न्यूज में आता रहेगा, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट.
उसमें क्या होता है, हमारे अर्बन एरियाज में अब बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, तो विंड गेट्स ट्रैप्ड, यस और नो? तो फॉर एग्जांपल इन दिल्ली व्हाट विल हैपन नाउ, व्हाट हैपेंड ऑलरेडी like last month in March beginning or in the April, that's what when the time is. So that's the harvest time, you know, in Punjab and Haryana. So in between the buildings in Delhi, the wind is not moving very fast. So what will happen, the entire pollution load is picked up from Punjab and Haryana, and it gets trapped due to friction in this Delhi airspace. So the SPM level is going to be, that is suspended particulate matter, ये बहुत बढ़ जाएगा और यहाँ पे स्मॉग बननी शुरू हो जाएगी और ये हालत हो जाएगी कि बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे और सब किसी को सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, अस्थमा पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे. Why? This is also because of friction. One of the reasons is friction. That is the urban heat island. तो ये भी है कि क्योंकि विंड नहीं चल रही तो एक ही जगह पे फ्रिक्शन की वजह से वहां पे जो हवा है वो ट्रैप हो जाती and it is not able to move out very rapidly. Otherwise, though, if the wind is blowing in direction, if it does not have friction, it should keep on blowing and you will feel comfortable because the temperature in the concrete area, you know, हमने ये पढ़ा कि अर्थ जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन अब्सॉर्ब करता है, फिर उसको रेडिएट भी करता है. अभी डे टाइम में तो ज्यादातर अब्सॉर्प्शन ही चल रहा है, नाइट टाइम में इट हैज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ रेडिएशन, नो, because sunset has happened. But this also becomes difficult for the earth to do if this kind of frictional forces are available. The wind is not able to move at the speed that it should move. ठीक है, so फिर वो हीट वहां पे ट्रैप होती रहेगी, पूरी तरह से रेडिएट हो नहीं पाएगा विंड के थ्रू. ठीक है, और नेक्स्ट डे हीट और ऐड हो जाएगी, तो जो रेडिएट होना चाहिए था वो पिछली रात हुआ नहीं, नेक्स्ट डे और हीट. so this becomes the urban heat island. रूरल एरियाज के अंदर टॉल बिल्डिंग्स आर नॉट देयर, green spaces are available, wind is able to move freely through the big farmlands and so on. So therefore, there is not as much heat buildup. But in urban areas, especially where you got concrete buildings, as we remembered, black color or gray color, ज्यादातर यही है concrete, तो ये best absorbing है for the heat. White is radiating for the heat. उन्होंने heat radiate करनी है. Black will absorb everything, radiate least. White will radiate most. ठीक है, इसी वजह से क्या करते हैं, कई बार अर्बन एरियाज के अंदर बिल्डिंग के टॉप्स को व्हाइट पेंट किया जाता है, सो दैट इट इज एबल टू हैव अ हायर एल्बिडो. याद है, पढ़ा था. एंड रेडिएट्स मोस्ट ऑफ द हीट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग. सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. चलिए, दिस वाज अ रिलेटेड एस्पेक्ट, मुझे लगा अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि जब अगली बार आएगा तो यू आर एबल टू कोरिलेट. Coming back to NCERT. So the third force we have already studied, Coriolis Force. So this is by a French physicist that he discovered it in 1844. It deflects the wind to the right direction in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. The deflection is more when the wind velocity is high. उतना ज़्यादा deflect करेगा. The Coriolis force is directly proportional to the angle of the latitude. It is maximum at the poles and is absent at the equator. So ये याद रखना, पेपर में पूछते हैं. The Coriolis force acts perpendicular to the pressure gradient. So for example, if it is low pressure at one place, high pressure at the other place, तो ये उसके perpendicular direction में काम करेगा. It will try to throw it towards the right angle or towards the left angle, like this. Let's say this is the low pressure, this is the high pressure, so it always acts in this direction, upward direction. Okay. Then the pressure gradient force is perpendicular to an isobar. The higher the pressure gradient force, the more is the velocity of the wind, and the larger is the deflection in the direction of the wind. As a result of these two forces operating perpendicular to each other, in low pressure areas, wind blows around it. At equator, the Coriolis force is 0 and the winds blow perpendicular to the isobar. तो सीधी direction में चलते जाएंगे. The low pressure gets filled instead of getting intensified. So this is the reason why tropical cyclones are not formed at the equator.
साइक्लोन के लिए ना एक राउंड मूविंग एयर पैकेट चाहिए, पर्ल विंड जैसा, जैसे वॉशिंग मशीन में होता है। तो वो यहाँ नहीं बन पाता, यहाँ पे तो सीधी विंड्स चलेंगी, ट्रेड विंड्स बोलते हैं इनको। ट्रेड विंड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि शिप्स के लिए बहुत आसान है, फिर वो एक ही डायरेक्शन में चलती चली जाएंगी जब इस विंड को कैप्चर कर लेंगे। तो सेल करते थे जब, अब तो इंजन के बेस पे, ठीक है। सो cyclones don't form at the equator. Why? Because Coriolis force is absent at the equator, so it is going to move on straight. So cyclone will be a little up in the northern or a little down in the southern hemisphere, but not particularly on the equator. इक्वेटर पे तो एक ही चीज होना है, बार बार बारिश ही आती रहेगी, ठीक है। अभी आगे देखें, pressure and wind. So the velocity and the direction of the wind are the net result of the wind generating forces. The wind in the upper atmosphere, that is 2 to 3 kilometer above the surface, जिस पे friction नहीं act करेगा, so are free from frictional effect of the surface and are controlled by the pressure gradient and Coriolis force only. दो ही चीजें उस पे काम करेंगी. When the isobars are straight and when there is no friction, the pressure gradient force is balanced by Coriolis force and the resultant wind blows parallel to the isobar. This wind is known as the geostrophic wind. तो जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या है, आइसोबार के पैरेलल चलती है, ठीक है। तो क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ दो ही फोर्सेस काम कर रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स एंड द प्रेशर ग्रेडियंट, ओनली टू थिंग्स। उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस कुछ नहीं, ठीक है। सो जियोस्ट्रॉफिक विंड्स आर लाइक दिस, दे आर गोइंग पैरेलल टू द आइसोबार्स, ओके। तो फॉर एग्जांपल, सो दे हैव शोन कि एक जगह पे 708 MB और 4 MB, ये दो आइसोबार है। दिस इज द हाई प्रेशर, दिस इज द लो प्रेशर। तो होना क्या चाहिए था, विंड जानी चाहिए थी इस डायरेक्शन में, अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होता था। क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है, इस वजह से विंड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द विंड विल ब्लो इन दिस डायरेक्शन, इट विल नॉट ब्लो इन दिस डायरेक्शन, कोरियोलिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, नो। Similarly here, it is moving in the left direction because in southern hemisphere it is to move towards left. तो ये समझ आया, विंड की डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो सरफेस से 2-3 किलोमीटर ऊपर, the type of wind that is blowing, we call it geostrophic wind. Why? Because it blows parallel to the isobar. बात समझ आई? हेलो हेलो। Yes, sir. Okay. Then next देखिए, the wind circulation around a low pressure, that means, is called cyclonic circulation. तो अगर लो प्रेशर के आसपास विंड ऐसे गोल गोल घूम रही है तो फिर उसको बोलते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन। एंड अराउंड अ हाई, दैट मींस हाई प्रेशर, इज कॉल्ड एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। लेट मी ड्रॉ इट टू यू एंड शो, इन्होंने नहीं किया हुआ ठीक से। So if there is a low pressure system, then we said in the northern hemisphere it will be towards the right. So the winds will be moving in like this towards the low. This way, the winds will always move towards the inside, and this is creating a circular effect in the center. Okay, so in the northern hemisphere, we said that they will be moving towards the right. Yes or no? Hello, hello. समझ आ गया? Yes, sir. Okay. High pressure के टाइम पे क्या होना है? Now they are moving towards the outside like this. So this is the movement in the high pressure zone. They are moving in the outside. Okay. So this is cyclonic if they are moving towards inside. Anti-cyclonic means they are moving towards the outside. So this is cyclonic. This is called as anti-cyclonic. Whenever they move towards the inside, cyclonic. Moving towards the outside, anti-cyclonic. Okay. So keep this in mind, and now let's read it again. Okay.
The wind circulation at the Earth's surface around the low and high on many occasions is closely related to the wind circulation at the higher level. Generally, over the low pressure area, the air will converge and rise. तो ये जो अंदर की तरफ converging air मैंने दिखाई थी लो प्रेशर के अंदर, ये converge होगा और ऊपर को उठेगा, ठीक है? And apart from convergence, some eddies, convection currents, orographic uplift, that means towards the mountain or a relief structure, and uplift along the fronts cause the rising of the air, which is essential for the formation of clouds and the precipitation. तो ये जो converging air इस तरह से low pressure के बाद ऊपर उठेगी, ultimately that rising air will form clouds and then there will be precipitation or rain. So let me give you a look into that also here. This is the perfect figure for this. So there is a converging air. This converging air rises up. As it goes up, it will form clouds like this and then there will be rain. जब हाई प्रेशर होता है तो उल्टा, हाई प्रेशर में ऊपर से हवा नीचे की तरफ आ रही है और डाइवर्ज कर रही है बाहर की तरफ, एंड दिस इज द एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, ठीक है? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के अंदर देयर इज काम, देयर इज नो रेनफॉल और एनीथिंग लाइक दैट, विंड भी कोई बहुत ज्यादा तेज आपको फील नहीं होगी. साइक्लोनिक कंडीशंस के अंदर यू विल फील द विंड, यू विल फील द रेन, एवरी काइंड ऑफ बैड वेदर थिंग विल हैपन. ओके, सो general circulation of the atmosphere. Now what is happening? The pattern of planetary winds largely depends upon the latitudinal variation. किस latitude में है, इक्वेटर के पास है, इक्वेटर से दूर है, उसके बेसिस पे आपका wind pattern depend करेगा. Emergence of pressure belts, so high pressure, low pressure जहां जहां पे create होता जाएगा. Migration of belts following apparent path of the sun. Like we said, in the summer, the belts will shift towards the north, and in the winter, they will shift towards the south. The distribution of continents and the oceans. Ocean की वजह से हमने पढ़ा था कि there is a moderating effect, और जहां पे continentality या land mass ज्यादा है, वहां पे थोड़ा सा जितने भी sun related aspects हैं, वो थोड़े और ज्यादा exasperate होंगे. Then the rotation of the earth, that means the Coriolis force. So these are the major factors which influence the pattern of planetary winds. तो prelims में सीधा क्वेश्चन आता है, which of the following factors will affect the pattern of planetary winds? तो ये 5 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है? The pattern of the movement of planetary winds is called the general circulation of the atmosphere. तो जो on an average हर जगह पे आपको wind movement summers में, winters में एक particular month के अंदर मिल रही है, तो that is the general circulation of the atmosphere. Like for example, these days in India during May, June, July, we'll say this is the time of southwest monsoon. What are we trying to mean by this is that in this time, the wind will blow from the south towards the north. Yeah, so that is the southwest monsoon. आ कहां से रहा है उसके हिसाब से wind का नाम रखते हैं. तो southwest direction से आ रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है? Where the wind is coming from, accordingly it is named. If it is coming from the east, we call it easterlies. If it is coming from the west, we call it westerlies. Coming from the southwest, we call it southwestern monsoon or southwesterlies. Similarly, coming from northeast, we call it northeast monsoon in India. It is like this. Okay. Then the pattern of the movement of the planetary wind is called the general circulation of the atmosphere, and it also sets into motion the ocean currents circulation, which influences the Earth's climate. तो ये तो हमने पढ़ा था कि ऊपर का 200 मीटर का जो लेयर है ओशन के ऊपर, वो भी हवा के साथ साथ ही चलेगा. So that will set into motion the ocean currents, warm in equator and cold if they are coming from the polar areas. So here it is. There will be various kinds of wind systems that we have. So you got low pressure, high pressure, again low pressure, and then high pressure like this. Okay. Now what is happening? The wind is coming from this direction here, so they are called northeast trade winds and southeast trade winds. इन दोनों को इकट्ठा लिखना हो तो बोल देते हैं easterlies because they are coming from the east. Okay, so they have to come from high pressure to low pressure. Fine. Then again in this place now they are coming from the west, so they are westerlies at this point of time. So
Moreover, again polar के अंदर फिर क्या होगा? Again they are coming from the east. Why there is this change in direction and all, we'll just study. ये ऐसा क्यों है कि ये वेस्टर्लीज हैं, ये ईस्टर्लीज क्यों नहीं? सोच के देखो, अभी भाई विंड कैसे जा रहा है? हाई टू लो जा रहा है ना, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन ओनली. क्लियर हो गया क्यों वेस्टर्लीज आए? हेलो हेलो. Their direction here also is being regulated by Coriolis force. Remember that. So if there is a high pressure and a low pressure here in the northern hemisphere, they are supposed to go towards the right direction, no? आया ना जल्दी जल्दी. Yes, sir. Yes. श्योर समझ आ गया क्यों हो रहा है? हाँ. गुड. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे दे आर डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द राइट. यहाँ पे भी देखो हाई से लो जा रहा है, तो दे आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, व्हिच इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस. ओके. In the in the southern hemisphere, here they are to be deflected towards the left. You see, they are getting deflected to the left. This also is moving from high pressure to low pressure. The deflection is like this towards the left. That's why they are moving westerlies here. Here again, high to low pressure. So they are to be deflected towards the left. So again, this is the way they will move. This is the easterlies. Okay. Now this is the surface wind direction जो आप देख रहे हो यहाँ पे. जो ऊपर को उठ रही है विंड, क्योंकि गर्म होने के बाद ऊपर भी उठेगा ना, तो गर्म होने के बाद जो इक्वेटर पे ऊपर उठ रहा है वो हमने पढ़ा था कि 30 डिग्री नॉर्थ पे जाके सिंक कर रहा है. दैट इज क्रिएटिंग वन सेल दैट इज कॉल्ड हैडली सेल, जो आपने एक इमेज के अंदर अभी देखा था. ये वाला इमेज ज्यादा क्लियर है, देखो हाई प्रेशर लो प्रेशर करने के लिए. खैर, so this is the Hadley cell, then there is a ferrule cell, and then there is a polar cell. So 3 cells get formed because of the upcoming and downcoming wind. Heat होके uplift होगा, फिर cool होगा तो down जाएगा. ठीक है? Now let's see. The air at the intertropical convergence zone rises because of convection caused by high insolation and low pressure is created. जो उन्होंने अभी बात की for the creation of this particular cell, Hadley cell. The wind from the tropics converge at this low pressure zones. The converged air rises along the convective cell. It reaches the top of the troposphere up to an altitude of about 14 kilometers and move towards the poles. This causes the accumulation of air at about 30 degrees north and south. Okay. Part of the accumulated air sinks to the ground and forms a subtropical high pressure belt. तो ये जो subtropical high pressure belt है ना, it is dynamically induced. It is not thermally induced. So there are low pressure and high pressures which are induced in a various way. इन्होंने यहाँ पे इसको बहुत क्लियरली डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन हम करेंगे अभी, ताकि वहां पे पढ़ने में भी आपको फिर आसानी रहे. यू आर एबल टू मेक अ लॉजिक आउट ऑफ कि इधर हाई क्यों और इधर लो क्यों. ठीक है, तो लेट्स ब्रिंग इट टू दैट. सो हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमारे पास सूर्य देवता हैं, एंड नाउ it is providing a lot of insolation at the equator. Due to this, there is this low pressure belt which is thermally induced. Thermal factors are high. Okay, so this creates a thermally induced low pressure at equator. इसको बोलते हैं equatorial low pressure belt, thermally induced equatorial low pressure belt. अब जो हवा यहाँ से गर्म होकर ऊपर को उठेगी, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ दोनों पे जाके सिंक कर रही है. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर एरिया वेयर हमने पढ़ा कि ऊपर से नीचे की तरफ हवा सिंक करे, ऐसी एक सिचुएशन हमने देखी अभी एंटी साइक्लोनिक के अंदर. रिमेंबर, यू जस्ट सॉ द एंटी साइक्लोनिक फिगर. Yes. That figure also over here. Where is the anticyclonic situation? Now in this case, what is happening? The wind is continuously trying to come down. So it will create a high pressure
which is dynamically induced. Yeah, since there is a convergence of the wind from the top and it is trying to come down, it will start putting pressure on this area. So this particular area is dynamic factors are higher because of the Hadley cell. Okay, so you get a dynamically induced subtropical high pressure belt. Okay, dynamically induced subtropical high pressure belt. क्लियर हो गया? तो यहाँ पे लो प्रेशर दो कारणों से है, एक तो हवा ऊपर को उठ रही है और थर्मल फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. देन इट गोज अप एंड डाइवर्जेस. ये है ना डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, तो यही डाइवर्जेंस यहाँ पे एक इधर को चला गया, एक इधर को चला गया, डाइवर्ज हो गया. दिस इज अंडर कोरियोलिस फोर्स ओनली कि व्हाई इट इज डाइवर्जिंग लाइक दिस टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट. ठीक है, as it diverges it cools down, so you have studied something called lapse rate. Now as it cools down, then the air has to come down because it does not have the energy to hold itself up. Okay, so ultimately as it comes down it will create a dynamically induced pressure belt here, that is the subtropical high pressure belt. Okay, ये क्लियर हो गया? अच्छा, अभी इनको बोलते हैं डोल ड्रम्स, क्योंकि ये ट्रेड की तरफ यूज हो सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है, तो शिप यहाँ से चलेगा, यहाँ तक जाएगा शांति से, विंड उसको सफिशिएंट मिलेगी. इधर क्या हो रहा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में, इधर से दोनों तरफ विंड बाहर निकल रही है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं, सो इट विल बी वेरी काम. देयर इज नो एक्चुअल विंड ब्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर लैटिट्यूड, तो दे आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड्स. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शिप्स जाती थी उनको अपने हॉर्सेस को पानी में फेंकना पड़ता था, क्योंकि उनको विंड ही नहीं मिल रहा सेल के लिए. ठीक है, सो दे विल अनलोड द हॉर्सेस एंड एवरीथिंग इनटू द ओशन, एंड दैट्स व्हाई द नेम केम एज हॉर्स लैटिट्यूड बैक इन द डे ट्रेडर्स. आजकल तो डीजल इंजन्स हैं, एवरीथिंग इज देयर. ओके, नाउ यू गॉट द टू बेल्ट्स की कैसे बनी. एक हमारे पास थर्मली इंड्यूस्ड हुई, एक जो है डायनामिकली इंड्यूस्ड है. प्रेशर वाले को बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड. ठीक है, लेट्स गो बैक टू द एनसीईआरटी. नाउ यू सी, down below near the land surface the air flow towards the equator as the easterlies. ये हमने already देख लिया. ठीक है, the easterlies from the either side of the equator converge in the intertropical convergence zone. So where is the ITCZ? This is the intertropical convergence zone. ये जहां पे दोनों easterlies आ रही है. So see, this is the wind pattern that is forming, इधर से भी और इधर से भी. तो ये push factor दोनों तरफ से मिल रहा है इसमें. हाई टू लो भी जा रही है, कोरियोलिस फोर्स भी जा रही है, एंड थर्ड फैक्टर ये सर्कुलेशन हो गया. ओके, नाउ सच सर्कुलेशन फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स upward and vice versa are called as cells. Such a cell in the tropics is called as the Hadley cell. In the mid-latitude, the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles and the rising warm air that blows from the tropical high. There is a sinking cold air that comes from the poles. तो यहाँ से पोल से हवा आके इधर सिंक हो रही है, and the subtropical high pressure belt जिससे there is a wind movement towards this direction. ये भी तो warm है ना compared to poles. तो यहाँ पे आपके पास comparatively pressure difference यहाँ पे भी बन जाएगा, high pressure to low pressure, westerlies के फॉर्मेट में. तो ये वाला विंड सिस्टम इस तरह से एक और सेल बनता है. हालांकि हैडली सेल स्ट्रॉन्गर है, फेरल सेल कंपैरेटिवली वीकर सेल है. ठीक है, ओके, सो दिस इज अनदर सेल दैट गेट्स फॉर्म्ड हियर. सो एट द सरफेस दीज विंड्स आर कॉल्ड एज वेस्टर्लीज एंड द सेल इज कॉल्ड एज द फेरल सेल. सो दिस पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड फेरल सेल एंड दीज आर वेस्टर्लीज. ओके, देन एट द पोलर लैटिट्यूड, अब बिल्कुल टॉप पे क्या हो रहा है यहाँ पे. सो पोल पे हमने पढ़ा था कि हाई प्रेशर है और कंपैरेटिवली इधर थोड़ा सा लो हो जाएगा. सो एट द पोलर लैटिट्यूड, cold dense air subsides near the poles and blows towards the mid latitude as the polar easterlies. अभी पोल पे हाई प्रेशर है, डेफिनेटली वहां पे तो विंड नीचे की तरफ ही आएगी. सब पोलर लो प्रेशर है, तो यहाँ पे भी एक इस तरह का सर्कुलेशन बन जाता है. लेकिन ये भी एज इट इज हमारे पास
थर्मली इंड्यूस्ड ना होने की बजाय डायनामिकली ही इंड्यूस्ड है विंड सर्कुलेशन. या ओके. The cell is called the polar cell, and the three cells set a pattern for the general circulation of the atmosphere. So this is how, in general, the circulation is happening. In specific, it is as per the land, as per the ocean. Now, the transfer of heat from lower latitude to the higher latitude maintains the general circulation. तो हमने पढ़ा था कि इधर से इधर heat transfer होना है. Equator पे ज्यादा heat available है. It will go up and it gets transferred, and this maintains this circulation at all point of time as a general circulation of the atmosphere. Now, the general circulation of the atmosphere also affects the oceans. The large-scale winds of the atmosphere initiate large and slow-moving currents in the ocean. ये हमने पढ़ा कि ocean water भी उस तरह से चलेगा. Ocean in turn provides the inputs of energy and water vapor into the air. These interactions takes place rather slowly over a large part of the ocean. So धीरे धीरे moisture जो है वो pick up होता रहेगा. फिर वो moisture जैसे जैसे ऊपर जाएगा फिर बारिश भी create करेगा. So that kind of things will also happen. So general atmospheric circulation and its effects on the ocean. So यहाँ पे एक particular video मैं आपको दिखाऊंगा पहले और फिर हम थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं. There is something called as El Nino and La Nina. So let me take you to YouTube and show you a video. Visible? Yes, sir. Yes. The El Niño phenomenon kicks into life in the Pacific Ocean around the equator. It can affect weather around the world, changing the odds of floods, drought, heat waves, and cold seasons for different regions, even raising global temperatures. But what is El Niño and how does it happen? Firstly, we need to know what's normally happening in the tropical Pacific. This vast stretch of ocean sees consistent winds, called trade winds, that blow from east to west. These winds push warm water near the surface in their direction of travel, so the warm water piles up on the western side of the ocean around Asia and Australasia. On the other side of the ocean, around South and Central America, as the warmer water gets pushed away from the coast, it's replaced by cold water which is pulled up from deeper down in the ocean, a process called upwelling. This creates a temperature difference across the tropical Pacific, with warmer water piled up in the west and cooler water in the east. Warmer water adds extra heat to the air, which causes the air to rise with more vigor, and it's this rising air that creates an area of more unsettled weather, with more cloud and rainfall. That rising air in the west sets up atmospheric circulation across this part of the world, with warm, moist air rising on one side of the ocean and cooler, drier air descending on the other. This circulation reinforces the easterly winds, so this part of the world sits in a self-perpetuating state until El Niño begins. If conditions are right, tropical Pacific weather systems or slow changes. So this is the normal situation. Okay, कि this is the Peruvian coast और यहाँ पे पेरू करंट है which is the cold current. ठीक है, और यहाँ पे विंड जो है ईस्टर्ली विंड के साथ साथ इधर हमारे पास गर्म पानी इकट्ठा होता रहेगा ओशन का, क्योंकि ऊपर का पानी तो हमेशा गर्म ही होना है इक्वेटर के ऊपर. तो गर्म पानी क्योंकि इधर इकट्ठा हो जाएगा तो ओशन से नीचे से पानी ऊपर उठना शुरू होता है. ओके, दैट क्रिएट्स कोल्ड वाटर हियर because of the upwelling. That is the lower water in the ocean which is cold coming up. So this creates a lot of good fishing ground for the Peruvian fishermen also. They are happy with it because upwelling के time पे nutrient fish सब ऊपर आ जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे काफी अच्छी बारिश होती रहेगी. This is the normal situation. Okay, with the easterlies.
और ये जो सेल इस तरह से बन रहा है कि हमारे पास यहाँ पे वार्म एयर है, फिर इधर आके वो कोल्ड एयर सेटल डाउन हो रहा है, तो ये अपने आप में वही जो लो और हाई का आपने देखा था, एट द लो देयर इज डाइवर्जेंस अप, एट द हाई देयर इज अ कमिंग इन एयर पैकेट लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है। दिस पर्टिकुलर सेल इज कॉल्ड वॉकर सेल, जो नॉर्मल है। अब आगे देखें। In the ocean around the equator can set off a chain of events which weaken or even reverse the usual trade winds. With weakened trade winds, there's less push of warm surface water to the western side of the ocean and less upwelling of cold water on the eastern side. This allows the usually colder parts of the ocean to warm, cancelling out the normal temperature difference. Because the area of warmest water moves, so does the associated wet and unsettled weather. This changes rainfall patterns over the equatorial Pacific, as well as the large-scale wind patterns. It's this change in winds which has a knock-on effect, changing temperature and rainfall in locations around the world. The main impacts are around the tropics, where you see an increase in the risk of floods in Peru and droughts in Indonesia, India, and parts of Brazil. But virtually wherever you are in the world, El Niño has the potential to affect you directly via the weather or indirectly via socio-economic impacts. There's another impact from El Niño which happens because of all the extra heat at the surface of the tropical Pacific. This releases vast amounts of energy into the atmosphere, which can temporarily push up global temperatures. This is why El Niño years often feature among the warmest on record. Each El Niño event is different, so the global impacts can change. You can find out more about the differing impacts of El Niño on our website. El Niño peaks around Christmas time and lasts for several months. It can die back to neutral conditions but sometimes reverses into La Niña. This is the flip side of the oscillation. अब एल नीनो क्या था कि जो नॉर्मल हो रहा है इस तरह से जो डायरेक्शन चल रही थी, तो वो हवा उतनी तेज नहीं चल रही, तो वार्म वाटर इस तरफ भी आ जाएगा। अब जहां पे वार्म वाटर है, जहां वार्मथ है, वहीं पे बारिश होनी। तो बारिश कहाँ हो रही थी? या तो सेंटर में हो रही है या फिर इधर हो रही है थोड़ी बहुत। सो नॉट मच टुवर्ड्स द इंडियन साइड एंड नॉट मच हियर, ओके। बट अगर वो ईस्टर्लीज बहुत तेजी से चलनी शुरू हो, तो जो नॉर्मल है उसका थोड़ा सा हाई एंड वर्जन, देन दैट इज कॉल्ड एज ला नीनिया। सो लेट्स सी। Which sees a strengthening of the normal trade winds. This pushes the warmest water to the far western part of the tropical Pacific and increases the upwelling of cold water in the east. This cooler water extends out from the coast of the Americas towards the central part of the ocean. La Niña also impacts global weather and tends to have opposite effects to El Niño. You can also see more about La Niña and its impacts on our website. ला नीनिया के टाइम पे क्या होगा? इंडिया में आपको बहुत ज्यादा फ्लड्स, मॉनसून्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेन्स मिलेंगे, और जो ड्राई वेदर है साउथ अमेरिका की साइड पे वो और ज्यादा एग्जैस्परेट हो जाएगा। सो एल नीनो का रिवर्स इफेक्ट आएगा। दिस इज कॉल्ड एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। इसकी फुल जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये होता है करीब 5-7 साल के वेरिएशन के अंदर। हर 5-7 साल में एक बार होगा। इसका ना तो हमारे पास क्लियर पैटर्न है, ये क्यों होता है, इसके एग्जैक्ट रीजंस हमारे पास नहीं है अभी तक। इट्स ऑलवेज अ मिस्ट्री। एंड जब सेट इन हो जाता है एल नीनो या ला नीना, तब हम बता पाते हैं कि यस नाउ दिस हैज हैपेंड। व्हाई? बिकॉज ऑफ द वाटर एंड द वॉकर सेल सर्कुलेशन एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर एबल टू लर्न बाय गोइंग एंड स्टडीइंग इन द ओशन। बट अदरवाइज व्हाई इट हैपेंस नोबडी नोस। 5-7 साल के साइकिल के बाद होता है, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू द एनसीईआरटी। सो warming and cooling of the Pacific Ocean is important in terms of general atmospheric circulation. The warm water of the central Pacific Ocean slowly drifts towards the South American coast and replaces the cool Peruvian current. Such appearance of warm water off the coast of Peru is known as El Nino. तो NCERT में जो लाइन दिखी है ना, इसी लाइन को वो यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन डालते हैं। It is the unusual warming near the coast of Peru. That is when the El Nino
starts taking place. Now, the El Nino event is closely associated with the pressure changes in the Central Pacific and the Australia. The changes in the pressure conditions over the Pacific is known as the Southern Oscillation. Oscillation means the change. Southern, it's happening in the Southern Hemisphere. The combined phenomena is called Southern Oscillation and El Nino, that is ENSO, El Nino Southern Oscillation. In the year when ENSO is strong, large-scale variations in the weather occur over the world. The arid west coast of South America receives heavy rainfall. South America में ना there is a driest desert that's called Atacama Desert, Peruvian current के पास में. तो वहां पे भी थोड़ी सी बारिश हो जाती. Then drought occurs in Australia and sometimes in India and floods in China. This phenomena is closely monitored and is used for long-range forecasting in major parts of the world. So there is another way in which Pacific Ocean is very important in determining the general atmospheric circulation. Okay? And the general atmospheric circulation is very important in determining the effects on the weather patterns in these countries. Now the seasonal wind, जैसे आजकल गर्मी में लू चलती है ना, तो हम उसको seasonal wind है इंडिया के अंदर. So the pattern of wind circulation is modified in different seasons due to shifting of the regions of maximum heating, pressure, and wind belts. The most pronounced effect of such a shift is noticed in the monsoons, especially in the southeast area. So Southeast Asia में monsoon wind का seasonal reversal होता है. एक टाइम पे एक डायरेक्शन में चलेगी, एक डायरेक्शन में एक टाइम पे चलेगी. These are the seasonal winds. Then local winds. So here actually you should use the word loop. So these are the differences in the heating and cooling of the Earth's surface, and these cycles, those develop daily or annually, can create several common local or regional winds. जैसे हमने land breeze और sea breeze already पढ़ लिया कल के lecture में. So because of the differential heating of the land and the sea, there will be land breeze and sea breeze. So this is a local wind. Okay. So similarly, there can be small regional winds like Loo, which is happening in Punjab areas these days. Okay. So एक यहाँ पे definition पढ़िए. The cool air of high plateaus and ice fields draining into the valley is called Catabatic Wind. तो जो mountain से valley की तरफ हवा आती है, because day और night का थोड़ा सा difference रहता है. तो night time पे mountain से valley की तरफ हवा आएगी. Day time पे valley से mountain की तरफ हवा जाएगी, because of the sun और differential heating type. कि सबसे पहले देखिए माउंटेन और वैली में से क्या हीट होना शुरू होगा जैसे ही डे लाइट आता है. What will start getting heated up? कहां पे ज्यादा हीट इकट्ठा होने वाला है? Okay, let's try and understand this. See, in science, what happens is if you know the how basic things will operate, you will know the rest. Let's see. So you got two mountain tops. The sunshade is right here. Now, as the sun is coming up, इस तरह से लेट्स से सनरेज सब जगह पड़ रही है. ठीक है. अभी क्या होने वाला है, इस साइड में जहां पे सनरेज पड़ रही हैं, आपके पास लैंड के अंदर हीट ज्यादा होगी या ऊपर ज्यादा हीट होगी? सर लैंड के अंदर ज्यादा होगी. लैंड पे ज्यादा हीट होगी. क्यों लैंड पे ज्यादा हीट होगी? हमने ये भी तो पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ लैप्स रेट, नो? यस सर. है ना? तो लैप्स रेट भी तो फंक्शन करेगा. तो आपके पास ये हाई टेम्परेचर पे होगा डे टाइम में, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये क्या होगा, लो प्रेशर. और ऊपर क्या होना है, लो टेम्परेचर ऑन द माउंटेन एंड प्रेशर विल बी हाई और लो. मैं देख रहा हूं सो रहे हो जाग रहे हो. हाई प्रेशर. बताओ जरा, क्या ये ठीक है? इज दिस अ फैक्ट or something else has to happen?
on, put your geographical thinking into it. आप में से किसी ने पैराग्लाइडिंग किए? हेलो हेलो, अच्छा पैराग्लाइडिंग होते देखिए टीवी पे, यस सर, है ना? तो वो डे में करते हैं पैराग्लाइडिंग या नाइट में करते हैं? डे में करते हैं सर। डे में करते हैं। क्यों करते हैं डे में? क्योंकि डे टाइम पे विंड्स वैली से माउंटेन के ऊपर को ब्लो कर रही हैं. दिस इज द वे द विंड्स आर ब्लोइंग. If the winds are blowing like this, it should be the situation that here it should be the high pressure and here it should be the low pressure. ऐसे ही होना चाहिए ना फिर? यस सर। यही होना चाहिए, यही होता भी. So in the valley you get the cold valley and the sun is right here. So here you will have the high temperature because वो peaks को पहले hit करेगी sunlight, valley को hit नहीं करेगी. So high temperature actually इधर है और इधर low pressure है daytime में. So winds are blowing upward in the daytime. That's why the paragliding is happening in the daytime. शाम होते होते वो बोलेंगे सर पैराग्लाइडिंग बंद हो रहा है, अभी नहीं कर सकते. क्यों? Now the wind is going this way in the evening. उल्टा. क्योंकि by this time this जो pressure variance था वो कम हो जाएगा and there will be a higher pressure here and a low pressure here. Throughout the day, the valley has now got heated enough. It has received sufficient amount of heat and therefore it builds a low pressure in the planar areas. इसीलिए जो लोग foothills में रहते हैं, आपने देखा होगा कि शाम को बड़ी ठंडी हवा चल रही होती है foothills में. तो उसका कारण यही है कि माउंटेन से हवा नीचे आ रही अभी. दिन के टाइम पे उतनी ही गर्मी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप जम्मू चले जाओ, so in the afternoon Jammu is as hot, Shimla is as hot as it is here in Chandigarh. But towards the evening, it will start cooling at a very rapid pace. Why? Because now the wind is coming down into the valley from the top of the mountain. It's the cold wind. Yeah. So this is the local wind scenario. What is happening? Really. This is the Catabatic wind. So, इसको पढ़ भी लो. Phenomena क्या हो रहा है? Mountain and valley winds. So in the mountainous regions, during the day, the slopes get heated up and air moves upslope. To fill the resulting gap, the air from the valley blows up the valley. तो जो स्लोप के ऊपर गर्मी पड़ रही थी वहां पे हवा गर्म होकर ऊपर निकल जाएगी और उसको फिल करने के लिए up the valley the air goes. Okay, this wind is known as what kind of wind? Valley breeze. जो वैली से माउंटेन टॉप तक जा रही है. During the night, the slope gets cooled and the dense air descends into the valley as the mountain wind. The cool air of the high plateaus and the ice fields draining into the valley is called as the Catabatic wind. Another type of warm wind occurs on the leeward side of the mountain. The moisture in these winds while crossing the mountain ranges condenses and precipitates. When it descends down the leeward side of the slope, the dry air gets warmed up by adiabatic process, and this dry air may melt the snow in a short time. अभी जो इन्होंने इतना लिख दिया, समझाया है नहीं, कोई फिगर नहीं बनाई, तो मैं समझा देता हूँ. Let's come back to the whiteboard. So what they're saying is, अगर विंड इधर से इधर जा रही है, तो ये इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड और इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, जो ऑपोजिट साइड है. ठीक है, विंडवर्ड साइड पे जैसे ही विंड ऊपर की तरफ चल रही है, सो इट कैरीज मॉइस्चर. इफ इट कैरीज मॉइस्चर, व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड ड्यू टू ओरोग्राफिक फीचर, दैट मीन्स द माउंटेन और एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन बिटवीन, टोपोग्राफी. सो ये जो क्लाउड्स बनेंगे ये इस तरफ बारिश क्रिएट करेंगे. So there will be rainfall on this side. ठीक है, अभी रेनफॉल होने के बाद जो वे विंड इस डायरेक्शन में जाएगी, तो अब इसमें मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल भी, इट्स ड्राई. सो दिस ड्राई विंड विल टेक अवे द मॉइस्चर. ठीक है, मोर ओवर
if it is heated up, then it will take away the ice also. So that's how the dry winds will be there. For example, in Western Ghats in India, on the windward side, there is a lot of rainfall. Pune falls on the leeward side in Western Ghats. So in Pune, there is hardly any rainfall. Yeah. On this side of the mountain, there will be good amount of forest also. But on this side, it will be dry. No vegetation. Because बारिश ही नहीं आती उधर. Exposed rock field होगा सिर्फ. ठीक है? चलिए आगे देखते हैं. Now the air masses. So there is a warm air mass and a cold air mass. This kind of two air masses can be there. So when the air remains over a homogeneous area for a sufficiently longer time, it acquires the characteristics of the area. अगर एक जगह पे हवा खड़ा रहेगा तो वो अगर वो एरिया गर्म है तो हवा भी गर्म हो जाएगा. अगर वो एरिया ठंडा है तो हवा भी ठंडा हो जाएगा. It's like this. The homogeneous regions can be vast ocean surface or vast plains. The air with distinctive characteristics in terms of temperature and humidity is called an air mass. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी अगर हवा में होता है एक पर्टिकुलर जगह के अंदर, then we call it an air mass. Okay. Now it is defined as a large body of air having little horizontal variation in terms of temperature or moisture. So let's say from between this space and this space, horizontally, not vertically. Now the homogeneous surface over which the air mass forms is called the source region. जहाँ पे बन रहा है उसको source region. Very simple. Now the air masses are classified according to the source region. There are 5 major source regions that we have. One is warm tropical and subtropical ocean, subtropical hot desert, relatively cold high latitude ocean, very cold snow covered continents in high latitudes, and permafrost, here permanently ice covered continents in the Arctic and the Antarctic. तो 5 मेजर हमारे पास सोर्स रीजन्स हैं, उनके हिसाब से एयर मासेस भी इसी तरह से बन जाएंगे. सो अकॉर्डिंगली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज्ड. देयर इज मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ये कहाँ पे बनेगा? वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन पे. देन देयर इज कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, दिस इज ओवर दी सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स. देन देयर इज मैरीटाइम पोलर, so this is in the cold high latitude oceans. Then there is continental polar, so this is in the your cold snow covered continents. Then there is continental Arctic, जो लास्ट वाले में. तो 5 रीजन्स हैं और पांचों के अपने अपने एयर मासेस हैं. ये आपने प्रीलिम्स के लिए भी याद रखना है. वैसे तो बड़ा आसान है, कॉन्टिनेंट के ऊपर कॉन्टिनेंट, ठंडा है तो पोलर, गर्म है तो ट्रॉपिकल, ओशन के ऊपर बन रहा है तो फिर वो उसको मैरीटाइम बोल रहे हैं एयर मास को. सिमिलरली ठंडा है तो ट्रॉपिकल, सॉरी कॉन्टिनेंटल, और सॉरी आर्कटिक, और या फिर गर्म है तो बोल देते हैं ट्रॉपिकल. तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल मींस व्हाट? ओशन वार्म. कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल मींस व्हाट? कॉन्टिनेंट वार्म. मैरीटाइम पोलर मींस व्हाट? ओशन कोल्ड. कॉन्टिनेंटल पोलर मींस व्हाट? कॉन्टिनेंट कोल्ड. And continental Arctic means very cold in the continent, so that's in the Arctic or in the Antarctic. ठीक है, तो 5 हमारे पास differentiating air masses हैं as per the region in which we go. Then comes the front. So front मतलब हवा का front वाला हिस्सा. तो एक तरफ से गाड़ी आ रही है तो उसका front होता है ना, जैसे उसी तरह से air का भी front है. So when the two different air masses meet, the boundary zone between them is called a front. तो एक तरफ से गर्म हवा आ रही है, एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, that's called a front. So let me show you how there is a front, how it looks like. Here. So there are 3 kinds of fronts that we have. By the way, these are the air masses जो आपने अभी पढ़े. That's how they're distributed. ठीक है? So continental, polar, tropic, maritime, इस तरह से है. ठीक है?
Okay. Front looks like this. एक तरफ से cold है, एक तरफ से warm है. ठीक है. तो अगर दूसरे एंगल से देखना हो तो ये cold and warm air. Let's see. So the process of the formation of the front is known as frontogenesis. There are 4 types of fronts. So there can be cold, warm, stationary, and occluded. 4 तरह के. When the front remains stationary, it is called stationary front. तो कोई उसमें movement नहीं हो रही, तो we call it stationary. When the cold air moves towards the warm air, its contact zone is called the cold front. तो यहाँ पे क्या है? Cold air is moving towards the warm air. उल्टा होगा तो warm air is moving towards the cold air. Then it is called the warm front. See, so warm air is moving towards the cold air mass. Then it is called the warm front. So whichever is moving, that will decide the name of the front. ठीक है? तो यहाँ पे warm air खड़ी है, cold air उसकी तरफ जा रहा है, तो front क्या बना? Cold front. Similarly, cold air खड़ा हुआ एक जगह पे और warm air उसकी तरफ जा रहा है, तो then it is the warm front. It's like this. If it is stationary, then it is stationary front. None of the air masses is moving. Okay. Then, if an air mass is fully lifted above the land surface, it is called the occluded front. The front occurs in the middle latitudes and are characterized by steep gradient in temperature and pressure. They bring abrupt changes in temperature and cause the air to rise and form clouds and to cause precipitation. So these are called temperate cyclones or extratropical cyclones. वो बनते हैं यहाँ पे. So for example, here you got 2 air masses moving, and this is the kind of front that will happen. So this is the cold air front. Okay, तो cold air front में क्या हो रहा है? Warm और moist air एक जगह पे थी और cold air कहीं से आ रही. ठीक है. Then this is the warm air front. Cold air एक जगह पे थी और warm air आ रही है. तो दोनों के अंदर जो cloud formation है वो दोनों में different होगा. We'll study that in depth in detail later. But right now, that's the situation. Occluded front looks something like this. So the ground air will just keep rising up, और जो ऊपर का front है वो warm बन जाएगा और cold air front इस तरह से नीचे चलता रहेगा. ठीक है. So देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ ना. If an air mass is fully lifted above the land surface, it is called the occluded front. So here the air mass is fully lifted above the land surface. Okay, this is the occluded front. Okay. Now these basically create a lot of precipitation, as it is shown कि जैसे जैसे clouds बनेंगे. अब जैसे cold air यहाँ था, warm air यहाँ से आया, तो धीरे धीरे clouds बनते चले जाएंगे जैसे ऊपर उठेगा, and then there is going to be precipitation. Here also cloud formation will happen. And then the precipitation. Ultimately होना सब में एक ही है कि जैसे जैसे हवा ऊपर जा रहा है उसमें condensation होगा and then precipitation होगा. Same thing in every front is happening. Cloud formation and precipitation. Okay. Now extratropical cyclones. Extratropical means in the temperate areas. Tropicals के बाहर. तो वहाँ पे temperate ही है. So the system developing in the mid and high latitudes. So that means tropical के ऊपर, temperate या frigid zone में. So they are called as mid-latitude or extratropical cyclones. तो एक तो cyclones बन रहे थे tropical area में, एक बनेंगे mid-latitude में. The passage of the front causes abrupt changes in the weather conditions over the area in the mid and high latitudes. Extratropical cyclones form along the polar front. Initially, the front is stationary. In the northern hemisphere, warm air blows from the south and cold air from the north of the front. When the pressure drops along the front, the warm air moves northward and the cold air moves towards the south, setting in the motion anti-clockwise cyclonic circulation. The cyclonic circulation leads to a well-developed extratropical cyclone with a warm front and a cold front. तो दो फ्रंट्स हैं आपस में मिक्स होके साइक्लोन बना रहे हैं. ठीक है. The plan and cross section of the well-developed cyclone is given in figure 10.9. So this is how it looks like. से कोल्ड एयर आ रहा है, एक तरफ से वार्म एयर आ रहा है, दोनों इस तरह से सर्कुलेटिंग
इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जहां पे भी सर्कुलेटिंग इफेक्ट हो हम बोलते हैं साइक्लोन है, ठीक है। So there are pockets of warm air or warm sector wedged between the forward and the rear cold air or the cold sector. The warm air glides over the cold air and a sequence of cloud appears over the sky ahead of the warm front and cause precipitation. This is how it will be there. Sequence of clouds ऐसी बनेगी, warm air और ये cold air। तो ऐसे निम्बोस्ट्रैटस, ऑल्टोस्ट्रैटस, सिरोस्ट्रैटस, अलग अलग तरह के क्लाउड्स बनते जाएंगे। ये क्लाउड्स किस तरह के होते हैं हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो जैसे जैसे क्लाउड्स बनेंगे वैसे वैसे बारिश होती रहेगी। जहां पे भी वर्ड निम्बो आ जाए, नींबू याद रख लेना, लेमन, सो उसमें से जूस निकलता है ना, तो ऐसी निम्बो जिस क्लाउड के आगे लगा होगा उसमें से बारिश होगी, they will cause rain, okay। so these nimbostratus clouds are going to create rainfall here। बाकी वो जो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, higher clouds, okay। So the warm air glides over the cold air and a sequence of clouds appear over the sky ahead of the warm front and causes precipitation. The cold front approaches the warm air behind and pushes up the warm air. As a result, cumulus cloud develop along the cold front. Cold front देख लेते हैं अभी। So cold front जो पीछे से पुश कर रहा था आके, वो इस तरह से क्यूमुलोनिम्बस हाई क्लाउड्स बनाएगा, ठीक है, ओके। देन द कोल्ड फ्रंट मूव्स फास्टर देन द वार्म फ्रंट, अल्टीमेटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट, एंड द वार्म एयर इज कंप्लीटली लिफ्टेड अप एंड द फ्रंट इज ऑक्लूडेड एंड द साइक्लोन डिसिपेट्स। तो अल्टीमेटली साइक्लोन खत्म हो जाएगा जब पूरे का पूरा कोल्ड फ्रंट जो है वो वार्म फ्रंट को रिप्लेस कर देगा। The process of wind circulation both at the surface and aloft, that means at a height, are closely interlinked. The extratropical cyclone differ from the tropical cyclone in number of ways. So the extratropical cyclones have a clear frontal system. यहाँ पे warm और cold front की वजह से होते हैं, while it is not present in the tropical cyclones. So इनका जो difference है ना, ये means में पूछते हैं। What is the difference between a tropical and an टेम्परेट साइक्लोन, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो हम पूरा अलग से डील करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड दिस इज द एंटायर साइक्लोनिक्स। सो दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनते हैं, उनका नाम कैसे रखते हैं, ठीक है, फिर उनमें डिफरेंस क्या होता है। सो दिस इज द टेबल दैट यू नीड फॉर दैट डिफरेंस, ओके। सो इट्स ऑन पेज 237 इन योर नोट्स। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल ओरिजिनेट ड्यू टू थर्मल, दिस इज डायनामिकली इंड्यूस्ड। तो अभी पहले क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्कस नहीं है, तो जब हम अपने नोट्स में पढ़ेंगे तब आपने करना है, अभी नहीं, ठीक है। तो अभी जस्ट इनके डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सो दे कवर अ लार्जर एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी, whereas the tropical cyclones originate only over the seas and on reaching land they dissipate. The extratropical cyclones affect a much larger area as compared to tropical cyclones. The wind velocity in the tropical cyclone is much higher. The extratropical cyclones move from west to east, while the tropical cyclones move from east to west. तो यही 5 डिफरेंस यहाँ पे जब पढ़ोगे तो ढंग से समझ भी आएंगे, क्योंकि अभी आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं पढ़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने किया तो है ट्रीटमेंट, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बताए हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं, ठीक है। सो आई वुड लाइक यू टू मूव फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन टू दीज नोट्स ओनली, ठीक है, क्योंकि इधर इन्होंने एक्सप्लेन तो किया नहीं अच्छे से, बस ऐसे ही टाइम पास कर दिया कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिक जो टेम्परेट साइक्लोन्स के बीच में। सो लीव इट फॉर अ व्हाइल, जस्ट कम टू दिस thunderstorms and tornadoes. Then for cyclones and everything we'll move to next, and we'll not do that today itself, we'll do it tomorrow. वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। So thunderstorms and tornadoes. So other severe local storms are thunderstorms or tornadoes. So they are short duration, occurring over a small area, but are violent. So thunderstorms are caused by intense convection on moist, hot days. Convection क्या था? Heat transfer by the air. A thunderstorm is well-grown cumulonimbus cloud. Cumulonimbus cloud होता है जो vertically form होता है, ठीक है? Producing thunder and lightning. When the clouds extends to a height where
sub-zero temperature prevails, hails are formed, and they come down as hailstorm. तो जैसे जैसे ऊपर ऊपर क्लाउड उठता जाएगा तो ऊपर जाके टेम्परेचर भी 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा. So then there is a hailstorm associated with the thunderstorm. If there is insufficient moisture, the thunderstorm can generate dust storms, and a thunderstorm is characterized by intense updraft of the rising warm air. So basically ऊपर की तरफ हवा उठेगी, which causes the clouds to grow bigger and rise to greater heights. This causes precipitation. Later, downdraft brings down to the earth cool air and the rain. तो एक बार हवा ऊपर उठती है फिर नीचे भी आएगा ठंडा होकर. From severe thunderstorms, sometimes spiraling winds descends like a trunk of an elephant with a great force, with very low pressure at the center, causing a massive destruction on its way. Such a phenomena is called as tornado. I'll show you the video of a tornado just now. So the tornadoes over the sea are called water spouts. Let's go to YouTube and see the formation of cyclones and these tornadoes. So that's the best way of visualizing them first. If you visualize them well, then you can study them well. Otherwise, it's very difficult to just read and try and understand them. Okay, so let's first understand the tornado. Give me a moment. Can last. So that's a tornado. Now you know. वीडियो के बाद इमेजिन करना थोड़ा आसान हो गया ना. Okay. Now let's go for the formation of cyclones. Give me a moment. Were you able to hear the audio as well? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is the There are tropical three cyclone. basic stages in the life of a tropical cyclone: its origin or source, the mature stage, and the dissipation stage कल where it पढ़ेंगे. dies out. These occur in a continuous process, not as separate and distinct stages. Each stage may occur more than once during the life cycle as the strength of the cyclone rises and falls. It may reach land, weaken, then go back out to sea where it strengthens once more. The formation of a cyclone depends upon the following conditions coinciding: a large, still and warm ocean area with a surface temperature that exceeds 26.5 degrees Celsius over an extended period. ये सारी कंडीशंस हमें चाहिए होती हैं यूपीएससी के लिए भी. तो कल के नोट्स में भी ये सब कुछ होगा. ये वीडियो का लिंक I'll share with you. You can watch later also. This allows a body of warm air to develop above the ocean's surface. Low-altitude winds are also needed to form a tropical cyclone. As air warms over the ocean, it expands, becomes lighter, and rises. Other local winds blow in to replace the air that has risen. Then this air is also warmed and rises. The rising air contains huge amounts of moisture evaporated from the ocean's surface. As it rises, it cools, condensing to form huge clouds about 10 kilometers up in the troposphere. More warm air rushes in and rises, drawn by the draft above. The rising drafts of air carry moisture high into the atmosphere, so that these clouds eventually become very thick and heavy. Condensation then releases the latent heat energy stored in the water vapor, providing the cyclone with more power. This creates a self-sustaining heat cycle. Drawn further upwards by the new release of energy, the clouds can grow to 12 to 15 kilometers high.
The force created by the Earth's rotation on a tilted axis, the Coriolis Effect, causes rising currents of air to spiral around the center of the tropical cyclone. It is at this stage that the cyclone matures and the eye of the storm is created. As the air rises and cools, some of this dense air descends to form the clear, still eye as the cyclone rages around it. The eye wall, where the wind is strongest, behaves like a whirling cylinder. Cyclones rotate clockwise in the southern hemisphere, anti-clockwise in the northern. ये रोटेशन का कारण भी Coriolis force ही है. Clockwise southern hemisphere में because it is to be deflected towards the left. That same thing. The lowest air pressure in a tropical cyclone is always found at the center and is typically 950 millibars or less. The average air pressure at the Earth's surface is about 1010 millibars. Tropical cyclones have significantly lower air pressure than the air that surrounds them. The bigger the pressure difference, the stronger the wind force. One of the lowest air pressures ever recorded was 877 millibars for Typhoon Ida, which hit the Philippines in 1958, where winds reached 300 kilometers an hour. Once formed, the cyclone's movement or track follows a pathway away from its source, driven by global wind circulation. As warm ocean waters feed Easterlies and westerlies उसके हिसाब से चलेगा. Global wind circulation. तो tropical areas में easterlies हैं तो it goes from east to west. That is going to be the movement. heat and moisture, the cyclone continues to enlarge. Okay. So that is the formation of the cyclone. तो anti-cyclones जो हैं उनके लिए भी frontal formation होता है. उसका भी वीडियो देख लेते हैं. Just give me a moment. Temperate cyclones. Let's see. Here at the University of Manchester. In this video, I want to talk with you about extratropical cyclones, also called mid-latitude cyclones, or simply typically X30. To give you a global perspective on where extratropical cyclones occur, consider the following image. We are looking at infrared radiation emitted by the Earth, but viewed by a satellite placed 35,000 kilometers above the equator. The satellite has an instrument that detects infrared radiation and converts it into a gray shading from black, which are the highest temperatures, to white, which are the lowest temperatures. So, white areas represent high clouds, mostly cirrus and deep convective storms. Black areas, on the other hand, are the Earth's surface in the tropics, and light gray areas represent the tops of low clouds or cooler land surfaces. When we put these images in motion, several aspects are very clear. First is a band of persistent convective storms along the equator. This is called the Intertropical Convergence Zone and is caused by the rising warm air in the tropics. North and south of the Intertropical Convergence Zone, in the subtropics, are darker regions on these images. These regions are relatively cloud-free and are associated with the desert regions of the world. These regions are associated with large-scale descending motion, which is why they tend to be relatively free of clouds. At the surface, we find regions of high pressure, the so-called subtropical high-pressure systems. Poleward of the subtropical highs lay the mid-latitude regions in both hemispheres. The mid-latitudes are characterized by relatively strong flow from west to east above the surface of the Earth, called the jet stream. Within the jet stream, disturbances form that we call mid-latitude cyclones. These are regions of low pressure, and they have circulations that, as a result, tend to evolve these comma-shaped cloud patterns, seen here and here. Winds around these mid-latitude cyclones blow around the low counterclockwise in the northern hemisphere
and clockwise in the southern hemisphere. These cyclones tend to move along with the jet stream from west to east, with the comma shape becoming more pronounced and wrapped up as the cyclone evolves. The jet stream forms along the strong gradient in temperature between cold polar air and warm tropical air in each hemisphere. Thus, the jet stream also is a manifestation of the strong gradient in temperature. So, poleward of the jet stream, the air tends to be cold, and equatorward of the jet stream, the air tends to be relatively warm. This temperature gradient is where our story begins. Consider the gradient in temperature in the northern hemisphere. To the north lies the colder air. The boundary between the cold air and the warm air, in reality, is a zone of transition from cold to warm, but in this schematic animation it's shown as a solid surface with a rearward slope over the cold air to the north. This surface is called a front. At some locations, a small perturbation to that surface may form, often due to an undulation or wave in the jet stream aloft. We call those waves Rossby waves. That perturbation is manifest as a low pressure region at the surface, indicated by the white contours of sea level pressure. Associated with that low pressure region is a counterclockwise wind flow around the perturbation in the northern hemisphere. This wind causes the sloping frontal surface So यहाँ to से circulation begin हो रही है, तो एक wind इधर से आ रहा है warm, and that is the cold wind from the other side, frontogenesis. And the reason for the formation of this temperate cyclone itself is frontal. उधर thermally induced है, इधर frontally induced है, air front की वजह से. form over time. Where the boundary between the warm and cold air moves, we call it a front. Where warm air advances poleward, a warm front forms. Where cold air advances equatorward, a cold front forms. The winds that blow through extratropical cyclones occur in conjunction with three separate air streams. The first airstream is the warm conveyor belt. Shown in red, the warm conveyor belt approaches the cyclone from the south, typically carrying warm, moist tropical air northward. The warm conveyor belt hits the frontal surface and rises up into the jet stream, where it splits. Part of the warm conveyor belt turns eastward, and part turns westward and wraps around the cyclone. It is this rising branch of the warm conveyor belt that gives the cyclone its comma shape in the satellite imagery. The second airstream is the cold conveyor belt, shown in blue in this diagram. The cold conveyor belt approaches the cyclone from the east or north. The air is usually cooler than the warm conveyor belt and stays close to the Earth's surface, underneath the rising warm conveyor belt. The third airstream is called the हमने पढ़ा है cold air sinks, warm air rises. तो इसलिए cold नीचे रहेगा. dry airstream or dry intrusion. This is descending air from the upper atmosphere, and as a result, it contains relatively little moisture. The indentation in the comma shape of the clouds associated with the extratropical cyclone is due to the dry airstream. Putting all three airstreams together, the relationship between them becomes apparent. The cold conveyor belt stays close to the surface, whereas the warm conveyor belt rides aloft over it. The dry airstream descends from the upper atmosphere behind the cyclone. As the cyclone evolves, the warm air is lifted from the surface, shrinking the warm sector. Combined with the circulation of air around the cyclone means that the cold air expands at the surface. The dry airstream becomes more wrapped up in the cyclone as well. Eventually, the surface fronts wrap up and form an occluded front. This is a merger between the cold front and the warm front. So to summarize, an extratropical cyclone forms as a result of the temperature gradient that exists between the poles and the equator. That is why fronts are such an important part of their structure and their evolution. As the cyclone intensifies and the circulation about it becomes stronger, the airstreams that are flowing through the storm
get increasingly wrapped up into the circulation. Hope that makes it clear. थोड़ा थोड़ा समझ आया? बाकी इसको पूरी तरह से कल समझेंगे जब टेक्स्ट भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है? I'll send you the video links of both these videos and watch it 2-3 times क्लास से पहले कल, ताकि you are able to follow through, ठीक है? फिर उस टाइम पे हमें वीडियो पे नहीं जाना पड़ेगा. Alright? So that's it for today. तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो भी हम कल कंटिन्यू करेंगे along with this tropical and temperate cyclones. This finishes the 10th chapter in the NCERT. Next is water in the atmosphere, so that's an easy chapter. वो आपको कंडेंसेशन और उन सारी चीजों के बेसिस पे ही पता चलेगा, क्लाउड फॉर्मेशन किस तरह के होते हैं, तो वो सारे क्लाउड्स कल के चैप्टर में आएंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे.